A portfolio plays a very important role and makes your first impression on your client. So in this video, we are going to define a portfolio website using Canva. Make sure to watch this video till the very end to know कि हमारी वेबसाइट पब्लिश होती है या नहीं या कोई एरर आ जाता है. So make sure to watch this video till the very end. I have video about like what things to include on your portfolio and how you can define your portfolio. Like you get access to my staff portfolio also, like you can see my portfolio, have a sample picture in your mind and all that thing. तो अभी एक पेज ही आता है, मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड सेलेक्ट की. तो आपकी अपने पर्सनल ब्रांड कलर्स और ब्रांड फॉन्ट्स होने चाहिए. ब्रांड कलर्स ब्रांड फॉन्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर पॉइंट पे आपके सेम रहते हैं. इट मे बी यूट्यूब, लिंक्डइन, समथिंग. आपके ब्रांड कलर्स और ब्रांड फॉन्ट्स सेम रहते हैं. सो हैव सर्टेन ब्रांड कलर्स. तो मेरे यहाँ पे ब्रांड कलर्स हैं एंड दैट्स इट. आई एम यूजिंग दिस. आई एम एडिंग सम पेजेस. 3-4 पेज तो लगेंगे ना. सो आई एम एडिंग सम पेज. यहाँ पे आप डिज़ाइन में फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो सर्च करके आप आइडियाज़ ले सकते हो. अगर आप पूरे वो बिगनर हो कैनवा पे, आप यहाँ से ही एक टेम्पलेट उठा के यू कैन मॉडिफाई इट. वरना ये ट्यूटोरियल तो है ही. ये ट्यूटोरियल ऑफ कोर्स पार्ट में होगा क्योंकि एक बहुत लेंथी हो जाएगा. बट हाँ, आप यहाँ से पोर्टफोलियोज के स्टाइल्स देख के यू कैन पिक इट आउट. अगर आप वैसे कैनवा में सर्च कर तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे. जैसे ये मेरे को एक पोर्टफोलियो मिला. आप नॉर्मल कैनवा में सर्च करोगे वहाँ पे भी मिलेंगे. वहाँ पे आपको और वेराइटी मिल जाएगी. तो यहाँ पे मेरे को ये पेज पसंद आया, मैंने ये उठाया. एंड नाउ आई कैन जस्ट सिंपली change the pictures and put in my picture, change the name, and I can do it like this. But if you want to have yours, okay, so create from basic. ये जैसे basic सा डिज़ाइन था, ऐसे ये हम अपना भी डिज़ाइन कर सकते हैं. I'll show you how you can do that also. So yeah, आप यहाँ से उठा के अपने चेंजेस भी कर सकते हो. बट या आई एम शोइंग यू टू हाउ टू क्रिएट योर ऑफ. तो अपना खुद का बनाओ ना. और भी आपको मिल जाएंगे कैनवा पे. यू डोंट नीड टू स्टिक टू इतना बेसिक्स वाले. बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे. आई एम जस्ट रिवर्स करेंगे. या हियर्स माय पेज. सो नाउ यू कैन थिंक ऑफ वेरियस स्टाइल्स कि आपको कैसा स्टाइल चाहिए. यहाँ से आप सैम्पल्स उठा सकते हो. लाइक साइड में आप अपनी कोई अपने वर्क से रिलेटेड फोटो रख सकते हो या ऐसी बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो. कुछ भी कर सकते हो. मैं स्टार्टिंग में आई वांट टू डिफाइन बाय हैविंग अ रेक्टेंगल. मैंने यहाँ रेक्टेंगल लिया अपने दूसरे ब्रांड कलर का. एंड नाउ आई एम डाइसेक्टिंग इट. आधे पे ये कलर है, आधी वेबसाइट पे, आधे पे. नाउ आई कॉपी इट. ठीक है, अब आधे पे इधर लेके आना है. व्हाट आई हैव चेंज्ड इट्स साइड. एक अब मैंने इसको इस तरीके से कर दिया. मन इट्स सिंपली अबाउट योर मन. मैंने एक ऐसा क्रिएट कर दिया. आई कैन अगेन कॉपी इट. आई कैन अगेन कॉपी दिस. डुप्लीकेट किया एंड इसको नीचे ड्रैग करके. अगर आपके इसके ऊपर नहीं आ रहा है तो इट इज लाइक आपने वो लेयर बिहाइंड इट की हुई है. सो यू कैन पुट द लेयर एंड से इट ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग टू बैक. उस तरीके से यू कैन सिंपली डू दिस. ये आ गया. इसको मेरे को रोटेट करके नीचे वाले पार्ट पे लेके आना है. 0 डिग्री शोज यहाँ सीधा है. एक पूरा मैंने बैकड्रॉप का एक सैम्पल क्रिएट कर दिया.
एंड इसके आगे हम कैसे पोर्टफोलियो डिफाइन करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2. आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो लेंथी. और अगर आपको वन शॉट देखना है तो वन शॉट भी आ जाएगी मेरे चैनल पे. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर बोथ द पार्ट 2 एज वेल एज वन शॉट ऑल्सो. हाउ टू डिफाइन अ पोर्टफोलियो. एंड या हमने पिछले वीडियो में इतना बैकग्राउंड डिज़ाइन कर लिया था. नाउ आई शो यू हाउ यू कैन पुट इन योर दूसरे टाइप की पिक्चर, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वो बैकग्राउंड किसी और से रिलेटेड आ रही है. आई शो यू हाउ. So just simply open a new tab, go to Google and search what you want to. Like किस चीज़ की फ़ोटो चाहिए. I'm using LinkedIn. I'm creating a
links and publish your website. So animations के लिए, if this is the thing where I have to put in my animation, I'll select this animate option. I'll click on this and I'll choose the type of animation I want. And yeah, that's done. Same for the this animation. Like, okay, now for the text पे क्या करना है? Coming to this thing, text पे you just need to click on animate, put in the type of animation you want, and that's done. Sample पे, and now let me show you effects क्या होते हैं. Effects are like, ये none है अभी, shadow, you can see the difference. Left, glitch, ये आपका वायरल वाला, अगर इसमें आप background बटन कर सकते हो. So these are effects. Now we have done animations, effects. Now coming to link. Here you can put in your testimonials and all that stuff. You can see the sample of portfolios on my channel. Now I am coming to how to put a link. यहाँ पे last page पे when you are putting the CTA कि हाँ आप मेरे साथ काम करो, you are putting your email, and here you can put in your link also. So yeah, like and subscribe. Again I have put in the, you can आप text पे भी link डाल सकते हो, एक photo पे भी. So I want to put in here, ये लिया 3 dots, link, and you can link any file you want. ठीक है, I want to link this page, आप ये page link कर सकते हो. If you want to link any external website, जैसे अगर मेरे को अपना YouTube channel link करना है, I can simply copy its link. I can simply copy its link and put in here, like for example मेरे को यहाँ पे पूरा वो रिपोर्ट भी शो करनी है. यहाँ पे I can put in link, and यहाँ पे I can put in वो Google Sheet का लिंक या जो भी, like let's copy this link, Control C, and yeah, उसका edit link यहाँ पे आ गया. You can put in link, copy किया था, you can put in that link, and yeah, you are done. अब इसके थ्रू you can open this thing. इस पे मैंने अपने फर्स्ट पेज का लिंक डाला था. I came to the first page. This is how you put in links. Now coming to, सबसे पहले you can preview your website की वेबसाइट कैसी लगेगी लॉन्च होने के बाद. Now coming to the extreme important part, publish. Just click on publish the website. Okay. पब्लिश, जब पब्लिश होगी तब आप एडिटिंग नहीं कर सकते. जब आपने अनपब्लिश करके फिर ही आप बाद में एडिटिंग कर सकते हो. यहाँ पे फ्री डोमेन कैनवा पे यू कैन रीसाइज ऑन मोबाइल रखना, क्योंकि अगर रीसाइज नहीं होगा तो नहीं होगा. रीसाइज विद मोबाइल फ्री डोमेन पे पुट इन करनी है. एग्जैक्टली अगर अपना डोमेन है यू कैन पुट इन योर लाइक डोमेन. अब यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट योर URL. समीक्षा, मेरे को यही URL ठीक है. कुछ भी पेज का डिस्क्रिप्शन, I'll put in some मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया. आप यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में भी जा सकते हो, लाइक पासवर्ड प्रोटेक्शन, कुछ भी. इफ यू वांट टू फिट इन यू कैन डू इट. एंड publish, preparing your design. Your design is done. Let's see it. Copy करके let's go and open it on another link, another tab. और हाँ, you can check out my previous video about कि portfolio में क्या क्या include करना है. इस video के previous parts, make sure you check them out if you are new on this video. And I have put in another video also in which I have analyzed some portfolios, so make sure to check them out ताकि आपको inspiration मिले. I have copied the link, share it everywhere you want to, put it on your LinkedIn, put it on your YouTube या जहाँ से भी आपको clients आ रहे हैं. Now let's open this link. मैंने link copy किया था. Now I'm opening it.
लोडिंग एंड लोडिंग। बट तो हमने एनिमेशन पुट इन की थी, नेम पे नियॉन इफेक्ट, नीचे ये, पीछे बैकग्राउंड। हाँ, पोर्टफोलियो इज रेडी। यहाँ खाली पेज छोड़ा था, यहाँ पे लिंक है, ये फर्स्ट पेज पे लिंक कर देगा। नाउ लेट्स ओपन वही एडिट वाला लिंक जो इस पे हमने पुट इन किया था, इस पे क्लिक किया, हम अपने एडिट पेज पे आ गए। This is the magic. So I hope you like this video. Show your creativity in your real portfolio because यही एक आपका first impression create करता है. Make a perfect portfolio, like show your creativity, spend time on this, have proper CTA, proper hooks and everything, and make yourself stand out. Wishing you lots of success. कोई भी query है, drop down in the comment box. I'll surely reply. And of course, do like and subscribe to my channel for more such informational content related to freelancing, LinkedIn, and mindset.